So in the last class, we were discussing about API, Application Programming Interface. Okay, so I told you that an API is a method for a computer program to communicate with another computer program directly. Okay, and it is used to perform CRUD operations. फिर मैंने आपको CRUD operations बताए थे, create, read, update, and delete. Okay, for HTTP, for SQL, we use different commands to perform these CRUD operations. Okay, so then I told you about two main types of APIs for web servers which can run over the internet. First one was SOAP and REST. Okay, SOAP is called Simple Object Access Protocol. And REST is called Representational State Transfer. SOAP क्या होती है? एक प्रोटोकॉल होती है. SOAP is a standard communication protocol that permits processes using different operating systems like Linux and Windows. They can communicate with each other using SOAP. Other than this, for SOAP, the transport will be HTTPS. Okay, HTTPS, and the data format is XML. Okay. Then I told you about REST, that REST is a client server architecture. REST is not a protocol. Okay. So here you can see, and the REST is used in real-time network. Okay. REST is an architecture, not a protocol. Protocol. It provides guidelines for the structure and you can say organization of an API. It gives guidelines for the structure and organization of an API. Okay. It supports any transport and data format. मैंने आपको 3 data formats बताए थे, right? JSON, YML, and XML. So it supports any transport and data format. Okay. Mostly HTTPS transport and XML, sorry, XML और JSON, हाँ दोनों ही होते हैं. JSON or XML data formats are used. Okay. It has faster performance and it is easier to work than SOAP. It has faster performance and easier to work
with, then, so. Okay. So it uses a client server architecture where client sends request and server sends response. It uses a client server architecture where a client sends request and a server sends response. A server sends response. Okay. It uses a uniform interface which provides simplicity. Okay. In REST API, no, you can say client context, client data. Context का मतलब client information, client data. Client context is stored on the server between requests and a response. Okay. It is stored on the server between requests. Okay. Clear. Now, how the REST API is created. So you need to understand REST constants. Okay. REST constants मतलब REST के API को create करने के लिए क्या structure use होता है, right? So first of all, a layered system. It uses a layered system. Any intermediary device, such as load balancers, must be transparent to the client and server. Any intermediary, okay, device like load balancer, next generation firewall, must be transparent, must be transparent to the client and server. Means traffic allow होना चाहिए devices के through. Okay. Client and server. It provides code on demand. Code on demand. Like servers can temporarily extend or customize the functionality
of a client by transferring executable codes. Okay. Now, whenever you are going to access any device, whenever you are going to connect using RESTful API, then a REST request URL is created. Okay. It will be like this, HTTPS. Then you can say demo.nc.com. This is your domain name. Okay. After this, here it will ask for API running AAA for AAA configuration, users and a user command, and close this. Okay. So this is target host, right? In this URL, this is target host, means target server. And this request, it is for resource, which resource I want to access. Okay. In the end, you can have any parameter that is optional. Okay. But in this case, we don't have any. यहाँ पे कुछ parameter हो सकता है, parameter. Okay. सर वायरलेस का प्रैक्टिकल नहीं हुआ सर। इसके बाद करेंगे. ओके. ठीक। ऑटोमेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद करेंगे. क्लियर. सो रिक्वेस्ट मेथड मस्ट बी सेंट. अब देखो मैंने बताया रेस्ट HTTPS यूज करता है. तो जब भी कोई रेस्ट API का पैकेट सेंड होगा तो वो क्या प्रोटोकॉल यूज करेगा, HTTPS, राइट. इन HTTPS टू परफॉर्म crude operation we use different some means commands, some commands are used, right, to perform crude operation: create, delete, update, modify. Okay. Clear. So request method must be sent like get or post. Okay, these are the commands. Okay, after that, put, post. Next line में लिखता हूँ. Put, post and patch. Right, ये एक request थी. Request include data in the body. Okay, in HTTP packet or in HTTPS packet, these commands are used: get, post, put, patch. Okay, crude operations को perform करने के लिए. Okay, ये commands use होती हैं. So whenever any get request or rest request will be sent, then a get packet or post, these commands will be used. Okay. After that, in message body of HTTP header, this post, put or patch request will be included, which is the data in the body. Okay, जब भी आप कोई HTTP का पैकेट सेंड करोगे तो एक हेडर क्रिएट होगा. उस HTTP हेडर में get request, get is the name of packet, you can say, which is used to send the request, HTTP request to any server. Okay, तो get का पैकेट जाता है. रिस्पॉन्स में
गेट के रिस्पॉन्स में हमेशा एक रिस्पॉन्स पैकेट आएगा, इसलिए यहाँ ऊपर ही मैंने लिखा था कि server sends response, yes, where a client sends request and server sends response. Okay, now when the client will send any request, now server can send some response code. Okay, तो आपको वो कोड का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, रेस्ट response codes. So here we have one x, x means यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है 100 101 like this. Okay, which is called informational. Okay, this code will be the part of server response message. Okay, then we have two double x code in which it is success. It can be 200 x, x की जगह पे क्या हो सकता है 200 which is okay. Then 201 which is created, अगर आपने कोई पोस्ट या पैच कमांड यूज करके कुछ पैरामीटर्स क्रिएट किए, then in response it will show you 201 created. 204 means no content. If you want to retrieve data, then if no content is available, then you will get 204. Or you can say deleted. No content means deleted, right? After that, we have 3xx. This is for redirection. If your web request is redirected from the destination server, then 3xx will be used. Now, in REST, you will get some errors also, right? So error response codes are also there. Here I am writing them for error. First of all, we have 4xx. This is for client error. Okay, these response codes will also be sent. Now 400, यहाँ पे x की जगह पे अगर 00 होता है कोड में तो क्या होगा, बैड रिक्वेस्ट. सर यस, सर ये रेस्ट रिस्पांस और जो एसटीपी एरर कोड्स जो होते हैं वो सेम है क्या सेम ये होते हैं. हाँ हाँ एरर बिल्कुल. कोड्स? देखो रेस्ट क्या करता है, एचटीटीपी को यूज करता है, राइट? तो जो भी एचटीटीपी की कमांड्स हैं या जो भी एचटीटीपी की प्रोसेस है वो सब रेस्ट में अप्लाई होती हैं, बिकॉज रेस्ट के लिए ट्रांसपोर्ट क्या है, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस. ओके, ओके तो सर. ऑल द दीज आर एचटीटीपी रेस्पॉन्स कोड्स एक्चुअली. ओके, ये सारे कौन से एचटीटीपी के रेस्पॉन्स कोड्स हैं, but here we are using http as the transport protocol for rest api, that's why they are rest response codes. Okay, है तो ये http के ही. आप नॉर्मल वेब ब्राउजर पे भी कभी आपने देखा होगा 404 एरर आता है जब वेबसाइट नहीं मिलती है इंटरनेट पे, है ना? तो वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ. then 401 we have 403 404, ये एरर्स होते हैं. Okay, so if you have 400, you are getting 400, it means it is bad request. 401 means unauthorized. Okay, 403 means forbidden, you are not allowed. And 404 not found, the resource is not found. After that we have 5xx. These are server errors. Here you will find 500. इसका मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर. There is some internal error on the server side. Okay, internal server error कैसा लग गया यार ये? Okay, so here headers will be included in the response page and the response code. Okay,
Clear. Now, if I talk about network मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट, अगर आप किसी एपीआई का यूज करके नेटवर्क को मैनेज करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट नेटवर्क मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट, then in network management transport, you can say the configuration and operational status of a network devices, components, and services can be remotely read or written. ओके, मतलब आप किसी भी डिवाइस को नेटवर्क में रिमोटली मैनेज कर सकते हो. यू कैन चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन, you can change its operational states and its components also, right, in the network. So netconf, restconf are the APIs which describe the protocols and methods for transport of network management data. अब जैसे मान के चलो आप किसी डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ सबसे पहले तो जो भी क्लाइंट आप यूज, लेट्स से यू आर यूजिंग रेस्ट एपीआई, तो उसमें जो आपका डिवाइस होगा वो सर्वर हो जाएगा. जो आपका कंप्यूटर है जिससे आप उस डिवाइस को एपीआई के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, वो क्लाइंट हो जाएगा, राइट? So client will send request to that particular router or firewall, and that server, that router being a server, it will send response. Okay. Now between them, you have to use some of the protocols, or you can say methods, for sending network management data from the client to server, from the server to client, right? So here we use netconf, restconf, and there is one another protocol which is called grpc. Okay, Google remote procedure call, but that is not widely used. Okay, so here you can say that. सर, जैसे Yes. हम टेलनेट और एसएसएच का यूज करते थे रिमोटली एक्सेस करने के लिए, मैनुअली करने के लिए, यहाँ ऑटोमेशन में सर हम नेटकॉन्स और एफकॉन्स यूज करेंगे. हाँ, और यहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस पे एक साथ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. अब टेलनेट एसएसएच के थ्रू जब आप डिवाइस को एक्सेस करते थे, तो आप एक डिवाइस को एक बार में एक्सेस करते थे, राइट? यस ऐसा सर. तो नहीं है कि आपको 4 राउटर का सीएलआई एक ही कंसोल में मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता था. तो यस उसमें सर. अगर आप 4 राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते थे, तो सब पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करनी पड़ती थी, राइट, वन बाय यस. वन. But in automation, it is not like this. You can push the script on multiple routers at one time, ओके right? सर. This is a big difference. That's why it is called automation, ओके right? सर. Here we are not doing the configuration manually on each and every network device. We are just pushing the configuration from a centralized server, you can say from a centralized management server, to all the network devices. Okay. ओके सर. Yes. So the configuration and operational states or states की जगह पे आप लिख लो status of a network device component, devices component can be read or written remotely. Okay, we use netconf and restconf APIs which describe the protocols and methods for transport
for transport of the network management data. Okay. Clear. Now, here a data model is used. Okay. A data model or a data modeling language is used, which provides a standardized way to represent the operational and configuration data of a network device. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है? These APIs use Yang data model. Okay. It is called yet another next generation. Okay. API or APIs use Yang data modeling language which provides a standardized way to represent the operational and configuration data of a network device. Give me 1 minute, guys. Operational and configuration data of a network device. ठीक है. Because you cannot directly push the configuration or operational status, right? Or you cannot directly get it from the network device. तो network device क्या करता है? उसको Yang data modeling language की help से एक standardized way में represent करता है, so that this data of network device should be, you can say, propagated from network device to the management computer, to the network engineers management computer. Okay. Clear. अब देखो, अगर मैं netconf के बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको, तो you can say that netconf was designed as a replacement of SNMP. As a replacement of SNMP. Netconf and Yang provides or provide a standardized way a standardized way to
programmatically modify the configuration of a network device. Modify the configuration of a network device like router, switch. Okay. Netconf was developed in 2006. 2006. It is a protocol that reads or applies the changes of the data on a device. Changes on a data on the device. Okay. XML data encoding method is used. Okay. Clear. And the transport is over SSH or TLS. Okay, SSH is mostly used for netconf. Okay. After that, we have RESTconf. RESTconf एक अलग protocol है. Okay. Or you can say API, yeah, not protocol. RESTconf is built on netconf. On netconf. Okay. It is an IETF draft that describes how to map Yang specification to a RESTful interface. Okay. It is an IETF draft, means it is developed by IETF that describes how to map a Yang model or Yang specification, how to map a Yang specification to a RESTful API interface, to a RESTful API interface. Okay. It uses HTTP over REST API. HTTPS होता है, ठीक है, HTTP HTTPS एक ही बात है, बस HTTP सिक्योर नहीं होता है और HTTPS सिक्योर होता है.
Now, mostly every application is using HTTPS, not HTTP. Okay. In RESTconf, XML or JSON data encoding method are used. Okay. And the transport is HTTPS. ओके, फिर देखो एक पोस्टमैन एप्लीकेशन होता है, वो भी यूज होता है नेटवर्क में, पोस्टमैन. ओके, postman is a very popular tool, very popular tool to test the operation of REST APIs. Okay, it can be downloaded as a standalone application or it can run as Chrome extension, Chrome plugin also. Downloaded as standalone application or as a Chrome plugin. Okay. इन पोस्टमैन एक टूल होता है, ठीक है. इन पोस्टमैन, ये कैपिटल में नहीं है. Collections and environment variables. Collections and environment variable are used in request and they can be reused in multiple requests. These are like objects. Let's say if you want to define any configuration, then you will define configuration variable or environment variable for that, and you will put them in collection. After that, whenever you are going to access any device using Postman, whenever you are going to post any script, then you just need to push that request to the device. Okay, आपको वो request send करनी होती है. So here requests can be exported as a code in multiple programming languages. Okay. Python can also be used to test the APIs.
Okay. There are many other tools which can also be used, okay, for configuration management. Like if I talk about other tools, then you will find like these are configuration management tools. देखो अगर आपको डिटेल में ऑटोमेशन पढ़ना है इन डेप्थ में देन वी हैव ए मॉड्यूल इन सीसीएनपी ओके सीसीएनपी एंटरप्राइज CCNP enterprise automation. You can learn that. Okay. Give me 1 minute. Someone is calling me. Now, if I talk about configuration management tools, so these configuration management tools are designed to make controlling large numbers of devices for easy administration and operations, right? Now, they allow us to control many different systems in an automated way from one central location. Okay, so you can write it like this. These tools are are designed to make controlling large number of devices. Devices which is or which makes things easier for network administrators and operations team. Okay, they allow us to control many different systems and network devices in an automated way from one centralized location, right? Okay. Some popular tools are आपने सुना होगा Ansible, Puppet and Chef. Okay, these are configuration management tools. So these configuration management tools can automate the provisioning and deployment of servers and network devices. These automation tools can automate
the provisioning. Provisioning means onboarding. When you are going to connect a device in the network, then it requires a specific configuration. So that configuration will be done automatically. And deployment of servers and network devices. Okay. Okay, अब देखो Ansible एक tool है. Ansible can run from any machines with Python 2 or 3 installed. Okay. It is agentless. Okay. It uses a push model. It means you will configure the things, then it will push the configuration on network device. It communicates over SSH by default. Okay. And it is simpler than most of the other tools, and it was released in 2012. So Ansible can also be used. Okay. it its modules are pre-built Python scripts. Okay. अब देखो होता क्या है कि आप डिवाइस पे डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करते हो, राइट? तो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन एवरी टूल यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स. जैसे आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो इंटरफेस के लिए एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स होता है ना, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए एंसिबल टूल में एक पहले से ही मॉड्यूल होता है which is a pre-built Python script. Okay. Many pre-built network modules are, you can say, available in Ansible tool. They can be used to do the configuration. Okay. You just need to make some little configuration changes. Okay. Some parameter changes. And after that, you can use that pre-built Python script to configure the device. Okay. Like Ansible inventory files define all the hosts that will be managed by कंट्रोल वर्क स्टेशन. ओके. इन्वेंट्री फाइल्स होती हैं जिसमें सारी नेटवर्क डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन होती है, जो आप उस पर्टिकुलर टूल से मैनेज करना चाहते हो. ओके. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ एंसिबल के बारे में भी. So you can say that Ansible can run on any machine with Python 2. These are Python versions. Okay, पहले Python 2 यूज हो रहा था, अभी Python 3 यूज हो रहा है. Python 3 installed. Okay. It is agentless. Means on the network device, you don't need any agent. It is agentless. And uses push model. Okay. It communicates over SSH. By default. Okay. It was released in 2012. ये भी लिख लो. Ansible modules are pre-built Python scripts. Okay. Many pre-built network modules exist.
which can be used to make configuration changes. Otherwise, you can create your own scripts and you can use them, right? Clear. Now, Ansible inventory. Ansible inventory or inventory files define all hosts that will be managed by the control workstation. Okay. And Ansible playbooks. Ansible playbooks are YAML files that define the instructions it needs to run. Instructions that it needs to learn. Okay. Or not learn, that it needs to run. After that, एक tool मैंने आपको बताया Puppet. Okay. Puppet uses an agent on the target device. Okay. Puppet क्या करता है? Puppet भी एक tool है. Puppet uses an agent on the target device. Okay. Puppet Master runs on Linux server. Ansible ज्यादा यूज होता है. Okay. On Linux server. Ansible tool की ट्रेनिंग लेते हैं लोग separately because it has many features. Okay. It uses pull model. And agent checks in every 30 minutes by default. Okay. It is written in Ruby. It is ये ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है, in Ruby language. It was created. Here you can add one more thing. It can check configuration consistency. तो ये पुल मॉडल पे वर्क करता है, पुश पे नहीं करता, राइट? It was created in 2005. Okay. Now it uses proprietary DSL rather than YML data encoding method. Okay.
एंड ए मैनिफेस्ट डिफाइंस द डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या होता है कि मैनिफेस्ट क्रिएट होता है, जो आपका पपेट एजेंट है जो आपके नेटवर्क डिवाइस पे रन कर रहा है, वो एक मैनिफेस्ट क्रिएट करेगा विच कंटेन्स द डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देन वी हैव ए शेफ। शेफ, or you can say chef, also uses an agent. An agent must be installed on the target device. तो देखो, जो एंसिबल होता था उसके लिए कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इट इज एजेंटलेस, राइट? बट पपेट एंड शेफ दे यूज एजेंट। इसका भी लिख ही लो, शेफ uses an agent on the target device, on the target device. It also uses pull model. Okay, it was released in 2009. Okay, ठीक है। तो ये टूल्स होते हैं जो आप नेटवर्क में यूज करोगे टू ऑटोमेट द कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखो ये क्या है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड है। ऑटोमेशन क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड, राइट? तो टू यूज ऑटोमेशन इन द नेटवर्क यू हैव टू enable network programmability with the help of some tools and languages. Okay, clear? अब देखो आगे SDN डिस्कस करते हैं, जो आपके ऑटोमेशन में लास्ट टॉपिक है। SDN, इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। SDN, ओके। Now, in network, traditional networking, each device was creating its control plane, management plane, and data plane to perform forwarding of the traffic. To perform forwarding of the traffic. Okay. Now, if I talk about control plane, बताओ control plane traffic कौन सा होता है? Control plane traffic makes decision about how to forward the traffic. How to forward the traffic. Okay. Control plane packets like routing protocol, or spanning tree update.
STP updates are destined to or locally originated on the device itself. Or locally, right, originated on the device itself. देखो आपका जो ट्रेडिशनल नेटवर्क में आपका जो ट्रैफिक था, नेटवर्क ट्रैफिक, वो 3 प्लेन में डिवाइडेड था. ओके, एवरी राउटर वाज मेंटेनिंग 3 प्लेन्स: कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एंड डेटा प्लेन. ओके, now control plane traffic is the traffic which is responsible to define how to forward the traffic, how to forward the packets, right? अब नेटवर्क में क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करती है, आपको पाथ फाइंड आउट करके देती है, राइट, कि आप किस पाथ से ट्रैफिक को सेंड कर सकते हो. इसी तरह से जो एसटीपी अपडेट्स होती है वो भी कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है. वो भी क्या बता रहा है कि नेटवर्क में कौन सा पाथ बेस्ट रहेगा, कौन सा ब्लॉक रहेगा, कौन सा फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा, राइट. तो ये क्या है, कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल से. तो जो भी ट्रैफिक डिवाइस का सीपीयू प्रोसेस करता है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक. आफ्टर दैट वी हैव मैनेजमेंट प्लेन, राइट. मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, देखो आपको ये पता होना चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक is the traffic which is used to configure or monitor the network device. The network device. For example, we take CLI access through Telnet SSH. We take GUI access through HTTP, HTTPS, right? We also send syslog to out to the syslog servers, right? We use NTP protocol. These are all management plane protocols. Okay. These all protocols come in management plane traffic. So management plane traffic is the traffic which is used to configure or monitor the network devices. Okay. So Telnet, SSH, NTP, HTTPS जो हम लोग GUI लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. फिर syslog, SNMP, ये भी एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, एक्सेट्रा. NTP, ओके, NTP लिख दिया, एक्सेट्रा, आर द मैनेजमेंट protocols. So these are all management plane traffic. Okay. फिर क्या होता है, डेटा प्लेन, राइट. डेटा प्लेन is the actual user's traffic which is forwarded through the devices. The data plane is the actual user's traffic which is forwarded through the network devices. Okay, तो ये 3 टाइप के प्लेन होते थे पहले. ओके, and every device was responsible to maintain all these 3 plane in traditional network or in traditional networking. Every device was responsible
Two, every device was responsible to handle all the three planes. Okay, all the three planes. Now in SDN, अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में क्या होता है? देखो ये तो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग की बात हो गई है ना, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। और अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में क्या होगा? SDN में, राइट? In SDN, the data plane and control plane is separated. Okay. Now let's discuss about SDN, software defined networking. So before going to SDN, here you can write it like this. In traditional, or here you can add network, इसी में add कर दो. Infrastructure devices, are responsible for their own individual control and data plane, in a traditional environment. In a traditional environment. Okay. Now SDN decouples or separates the data plane, the control plane and data plane. SDN decouples the control plane and data plane. The control plane is handled by centralized controller and network infrastructure devices are still responsible for data plane forwarding, and network infrastructure devices means routers devices are still responsible to forward डेटा प्लेन. देखो यहाँ पे पहले ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में क्या होता था कि कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, सारे नेटवर्क डिवाइसेस अपना अपना क्रिएट करते थे, राइट? जैसे कोई भी राउटर है, मान के चलो आप बीजीपी रन कर रहे हो, ओएसपीएफ रन कर रहे हो, है ना, तो आपको सारे राउटर्स पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना पड़ता था. फिर सारे राउटर्स एक दूसरे के साथ ओएसपीएफ की नेबरशिप क्रिएट करते थे बाय एक्सचेंजिंग अ लॉट ऑफ ओएसपीएफ पैकेट्स, राइट? एंड आफ्टर दैट दे वर क्रिएटिंग देयर OSPF database, then they were creating their routing table. After that, data forwarding was started, and the same device was responsible to perform data forwarding also. उसी router से ही तो आप data forward करते थे. अब SDN में क्या होता है? In SDN, control plane and data plane is separated. It is decoupled. Okay. The control plane is handled by centralized controller, and network infrastructure devices are still responsible to forward data plane. अब देखो होता क्या है, कंट्रोल प्लेन जो भी मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड ट्रैफिक था, पाथ फाइंड आउट करने का काम था, अब वो राउटर का नहीं रहा, अब वो किसका हो गया? कंट्रोलर का. So controller is responsible to provide all the routing information security keys to the infrastructure devices,
and the network infrastructure devices will only forward data plane. उन्हें नेबरशिप नहीं बनानी। अब वो एसपीएफ की नेबरशिप आप राउटर्स के बीच में नहीं बनाओगे, क्योंकि जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा? कंट्रोलर। ओके, तो ये सेंट्रलाइज्ड हो गया ना? क्लियर? Yes, sir. So the network infrastructure devices query the controller. Query the controller for guidance as needed. Okay. And provide it with the information about the traffic they are handling. Okay. Now, if I talk about SDN architecture, so SDN, software defined networking, is made up of 3 layers. Okay. It is made up of 3 layers. First one is application layer. Then we have control layer. And then infrastructure layer. Okay. Now, between application layer and control layer, it is called northbound API. Northbound API, and REST is used. REST API. Between control layer and infrastructure layer, it is called southbound API. And here SNMP, REST, NetConf, RESTConf, SSH, ये सब यूज होती है। Okay, at application layer, SDN, business applications will be running. Okay, at control layer, SDN controllers will be running. SDN controllers. And at infrastructure layer, network devices are connected. तो देखो, आप एप्लीकेशन लेयर से एक्सेस लोगे, राइट? एसडीएन एप्लीकेशन का एक्सेस कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन लेयर से। फिर वहां रेस्ट एपीआई के थ्रू आप कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करोगे, राइट? फ्रॉम कंट्रोलर योर कॉन्फ़िगरेशन विल बी पुश्ड टू नेटवर्क डिवाइस यूजिंग एसएनएमपी, रेस्टकॉन्फ, नेटकॉन्फ, एसएसएच, जो भी आप प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, नाउ व्हेन यू इम्प्लीमेंट एसडीएन in a private LAN, when you implement SDN in a LAN, then it is called, this deployment is called SD access.
when you implement SDN in WAN, the deployment is called SD-WAN. And when you implement SDN in data center, it is called ACI. It is called ACI, Application Centric Infrastructure. Okay. So here you can write it like this. When we implement, these are the implementations. When we implement SDN when we implement SDN in LAN, in private LAN, when we implement SDN in LAN, it is called SD access. SD access. Okay. It is a newer method of network access control. Network access control, which solves the limitation of traditional network. अब देखो ट्रेडिशनल नेटवर्क में एक्सेस कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते थे यूजर्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑलवेज कनेक्ट टू द सेम फिजिकल पोर्ट वेयर दे आर असाइंड एन एक्सेस वीलैन एंड आईपी सबनेट राइट तो जब भी आप ट्रेडिशनल नेटवर्क में एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करते थे आप क्या करते थे सबसे पहले लेयर 2 पे वीलैंस को बनाते थे फिर डिफरेंट इंटरफेसेस पे डिफरेंट वीलैंस को यूज करते थे राइट so that you can define which users can communicate with each other and which users cannot communicate with each other. Other than this, we were creating access control list to define for which traffic flow the communication is allowed, right? But इनसे क्या होता है आपकी configuration complex हो जाती है and you need to configure each device individually, right? So the solution does not support user mobility also. अब ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में एक्सेस कंट्रोल के जो मेथड थे वो ज्यादा स्केलेबल नहीं थे ओके सो हियर वी यूज एसडी एक्सेस it is a newer method of network access control which solves the limitations of traditional networks okay in sd access the traffic flow security security is based on user identity, not a physical location or IP address. User identity, not on physical location. Okay. और IP subnets. देखो यहाँ पे क्या होता है जैसे कोई यूजर एसडी एक्सेस नेटवर्क में कनेक्ट होगा वो सबसे पहले ऑथेंटिकेट होगा उसका यूजर नेम पासवर्ड चेक होगा ठीक है और उस यूजर नेम पासवर्ड के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस प्रोवाइड होगा ओके क्लियर ये होता है एसडी एक्सेस जब आप अपने प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योर करना चाहते हो ओके टू कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड are required
for SD access, first one, users are authenticated by Cisco ICE Identity Services Engine. It is called Identity Services Engine and Cisco DNA Center. Cisco DNA Center, which contains security policies, to define access control. ओके, तो ये एसडी एक्सेस में आपको दो कंपोनेंट यूज करने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्को आइस, इट इज एन ऑथेंटिकेशन सर्वर, एंड सिस्को डीएनए सेंटर. डीएनए सेंटर इज द कंट्रोलर ऑफ एसडी एक्सेस. डीएनए इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क एनालिसिस और डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर. ओके, डीएनए सेंटर is the controller for SD access. Okay. After that, second implementation is SD-WAN. यहाँ आप ऐड कर सकते हो when we implement SDN in WAN, it is called SD-WAN, software defined wide area network. It is called SD-WAN. Okay. Now, if I talk about traditional WAN deployments, in traditional WAN deployments, we were configuring each and every device separately. अब देखो, अगर आपका WAN network है जहाँ पे thousands of sites connected हैं, thousands of routers connected है, right? तो वहाँ पे अगर आप सारे routers को one by one configure करोगे और individually manage करोगे, then it will be unmanageable and complex also, right? Configuration is not standardized organization wide, because all these routers will be accessed by different network engineers, different teams of network engineers, right? And traditional WAN was focusing on the link connectivity, not the required performance for applications. So it was difficult to migrate to another WAN service when we were using traditional WAN. Now, SD-WAN is called software defined WAN. So Cisco acquired Viptela in 2017. Cisco acquired Viptela. Viptela एक कंपनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन, in 2017, and enhance their SD-WAN solution, which was iWAN. Which was called iWAN. देखो, पहले सिस्को का SD-WAN solution था iWAN, okay? But Cisco acquired this Viptela company in 2017,
and they started using their SD-WAN solution. They enhanced their SD-WAN solution, and now it is called Cisco Viptela SD-WAN. क्या बोला जाता है? Cisco Viptela SD-WAN. It provides automatic provisioning of WAN devices and setup of WAN connectivity between sites. Between sites. Okay. In SD-WAN, management monitoring and failover is automated and done through a centralized controller. देखो SDN है तो यहाँ भी क्या यूज होगा? कंट्रोलर. वी मैनेजर. ओके, इसको क्या बोलते हैं? वी मैनेजर. एसडी एक्सेस में कंट्रोलर का नाम क्या बताया था? सिस्को डीएनए सेंटर, राइट. एसडी वैन में कंट्रोलर क्या होता है? वी मैनेजर. ओके, क्लियर. एसडी वैन is transport independent. It can be deployed over any transport like public internet, MPLS, multi-protocol label switching, or 5G LTE network. These are traditional WAN transports methods which can be used. Okay, ये होता है SD-WAN. And then we have Cisco ACI, right? Cisco ACI. देखो ACI क्या होता है? ACI is called application centric infrastructure. ACI is called application centric infrastructure. Okay, when we implement SDN in data center, ये तीसरी implementation है, right? When we implement SDN, software defined networking, in data centers, then we deploy Cisco ACI, application centric infrastructure. ओके, देखो अब इन सारी टेक्नोलॉजीज के लिए अलग अलग कोर्सेज है, ठीक है. अगर आपको एसडी एक्सेस पढ़ना है तो ये सीसीएनपी एंटरप्राइज का पार्ट है जो आप एसडी एक्सेस पढ़ते हो, जिसमें डीएनए सेंटर, सिस्को आईसी सारी चीजें होगी. ओके, if you want to learn SD-WAN, it is also the part of CCIE and CCNP enterprise. Okay,
And if you want to learn Cisco ACI, then you have to go to data centers. आपको data center पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. Okay, जैसे data center में Nexus switches use होते हैं. जो हमने switches पढ़े थे वो catalyst switches थे, right? These catalyst switches are being used in enterprise network or in campus network, in local area network. Okay, सर अरुवा and स्विच नहीं पढ़े हैं क्या हम लोग? नहीं, अरूबा क्यों पढ़ेंगे? सर इसमें नहीं आएगा अरुवा? अरूबा सिस्को का थोड़ी होता है सर उसके लिए मान ना? लीजिए वो भी तो नेटवर्किंग में आता है ना सर? तो यार सीसीएनए में पूरी नेटवर्किंग थोड़ी होती है वो तो अलग डिफरेंट कंपनी का स्विच है ना, वो थोड़ी पड़ेंगे इसमें। वो एचपी का स्विच होता है, एचपी अरूबा। हाँ सर वो तो ओके, जानता हूँ सर, लेकिन मान लीजिए मैं सोचा कि इसी में वो भी आएगा अरुवा का। नहीं ऐसे तो यार फिर कभी खत्म ही नहीं होगा ना। ये सीसीएनए, इसमें हम लोग सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस पढ़ते हैं। नेटवर्क में तो और भी डिफरेंट वेंडर हैं, जोनीपर के स्विचेस चलते हैं, राइट? एचपी के स्विचेस है, नोकिया के स्विचेस है, एल्काटेल कंपनी है जो, बहुत सारे स्विचेस चलते हैं डिफरेंट वेंडर के। Okay. So when we implement SDN in data center, then we deploy Cisco ACI, application centric infrastructure. To deploy Cisco ACI, सर उसका सेटअप मिल सकता है क्या सर अरुवा का? अरूबा का मैं स्विच दे सकता हूँ आपको, स्विच की इमेज। हाँ सर दे दीजिए सर, मुझे प्रैक्टिकल करना है सर प्लीज। ठीक है, ठीक है। आपने इवन जी सेटअप कर रखा है? हाँ सर मुझे तो अभी तक मेरा लैब नहीं मिला है सर, मेरे को पढ़ते हुए इतने दिन हो अच्छा, गए। मैं आपका जब नाम क्या सारा है? प्रैक्टिकल अपने खुद के विजय, ईवीएनजी से। आपको यार दे चुका हूँ लैब, तृप्ति मैडम को दी थी मैंने आपकी लैब। विजय मुझे नाम है नहीं ना मिला आपका? है सर, अभी तक मेरे पास कोई लैब नहीं है सर, मैं खुद अपने ईएनजी सेटअप बनाया उस पे करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो सेम ही है वैसे तो वो, लेकिन मैं आपको शो कर सकता हूँ। मैंने उनको लैब भेजी थी आपकी, जब स्टार्ट हुआ था बैच, तीसरे चौथे दिन ही, जब मैंने बाकी लोगों को दी है तभी नहीं सेंड किया मुझे था। नहीं मिला सर, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला आप सर। एक बार ग्रुप में डाल देते तो सही रहता। तो सर फिर मुझे से सेटअप सेंड कर सर देता। अरुवा का मेरे को दे दीजिए सर प्लीज। हाँ, तो इमेज में शेयर कर दूंगा अरूबा स्विच की, ठीक। ठीक है सो टू डिप्लॉय सिस्को ACI, we need to connect Cisco Nexus 9000 series switches in the data center, and Cisco APIC. It is called application policy infrastructure। सर, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग बताएंगे ना सर? ट्रबल शूटिंग भाई, जब हम लोगों ने पढ़ा था उसी टाइम पे आपको मैंने शो कमांड्स बताई थी ना बहुत सारी, तो उसी हाँ जी। टाइम पे हमने कर लिया था, अलग से उसकी कोई क्लासेस नहीं होती। ओके सर। ओके, ओके and Cisco APIC controller is used to send to provide centralized configuration, to provide centralized configuration management, reporting and monitoring for data center network। ओके, ये डेटा सेंटर में यूज होता है सिस्को ACI। तो तीनों अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, if you are going to implement SDN in local area network in private LAN, then it is called SD access. If you are going to implement SDN in WAN, in wide area network, then it is called SD WAN,
And when you are going to deploy SDN in data center, then we deploy Cisco ACI, okay, application centric infrastructure. तो ACI में कंट्रोलर कौन है? Cisco APIC, okay, application policy infrastructure controller, which will be integrated with all the Cisco Nexus switches which are connected in your ACI network, okay. क्लियर? तो ये ऑटोमेशन के बारे में था जो फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए. If you want to learn all these things in depth, then you have to go to CCNP Enterprise. Okay, CCNP Enterprise में सारे मॉड्यूल्स हैं अलग अलग. उसमें एक मॉड्यूल है जो राउटिंग स्विचिंग के लिए है, जिसमें आप इन डेप्थ EIGRP, OSPF, BGP, MPLS, DMVPN, मल्टीकास्टिंग, ये सारी चीजें पढ़ते हो. फिर एक मॉड्यूल डेडिकेटेडली SD WAN के लिए है, जिसमें आप SD WAN डिप्लॉयमेंट पढ़ोगे, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, मैनेजमेंट, एवरीथिंग. आफ्टर दैट वी हैव अनदर मॉड्यूल फॉर Cisco SD Access, जिसमें आप DNS सेंटर पढ़ोगे, जिसमें आप Cisco ICE पढ़ते हो, कैसे आप DNS सेंटर को ICE से इंटीग्रेट करोगे, एंड हाउ विल यू क्रिएट SD Access Fabric for your private LAN. Other than this, if you want to learn Cisco ACI, then you have to learn CCNP data center and CCIE data center. Okay, वो थोड़ा सा ब्रॉड कोर्स हो जाता है अलग. Okay, clear? Any doubt till now? तो अब वायरलेस का प्रैक्टिकल है, वो मैं आपको कल करवाऊंगा. ओके, ओके सर. और उसके सर बाद पाइथन आपका का ये फिनिश हो जाएगा. सर बेसिक पाइथन वगैरह बताएंगे सर प्रैक्टिकल उसका? पाइथन का प्रैक्टिकल नहीं है CCNA में. CCNA में ऑटोमेशन का कोई प्रैक्टिकल नहीं है. ओके, अगर आपको ऑटोमेशन इन डेप्थ में पढ़ना है तो वो CCNP एंटरप्राइज में मॉड्यूल्स में होता है. Here we have all the fundamental things about automation and you can say network programmability. सर क्लासेस खत्म होने के बाद हमारे पास लैब एक्सेस रहेगा नहीं क्या? हाँ, लैब एक्सेस रहेगा आपके पास अभी 10-15 दिन के लिए तो रहेगा. फिर जिसको चाहिए वो मुझे इन्फॉर्म कर देना. ओके, ओके उसका मैं कंटिन्यू करवा दूंगा थोड़े दिन और. ठीक है सर. सर पालो अल्टो का न्यू बैच कब चालू होगा सर? पालो अल्टो का यार वीकेंड में स्टार्ट होगा. अगर वीकडेज में स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा. वीकेंड में तो अभी स्टार्ट हुआ था कुछ दिन पहले ही, अभी उसकी 10 क्लासेस हो गई हैं, तो 10 और रिमेनिंग है. उसके बाद फिर वीकेंड में होगा. वीकडेज के लिए आप एक बार बात कर लेना मैनेजमेंट में, वो बता देंगे आप लोगों को. ठीक, मैं पालो ठीक. अल्टो का सर ज्वाइन करना चाहता हूँ. हाँ, पालो अल्टो कर लेना, बहुत फ्रूटफुल रहेगा. पता है हर जगह पालो अल्टो फायरवॉल की क्योंकि सर सोच रिक्वायरमेंट रहे हैं होती है. सर